पढ़ रहे थे अपन? So what is a tort? Tort क्या है? सिविल रॉन्ग, इंडिविजुअल रॉन्ग, ट्विस्टेड, क्या है वो? डैमेजेस क्या है? डैमेजेस मतलब compensation, कंपेंसेशन। टॉर्ट्स से वर्ड आता टॉर्शियस। क्या बोलेंगे इसको? tortious, tortious, टॉर्शियस। अगर आप कोई twisted, टॉर्ट करे, if someone commits a tort, then it is called as which act? tortious act, wrong. Tortious act. And because of some tortious act, कोई लीगल इंजुरी हुई, because of some tortious act, some legal injury happens, then what type of compensation is given? Liquidated or unliquidated? Unliquidated. In torts, unliquidated compensation is awarded. मतलब not pre-agreed. समझ आ रहा? कोई डाउट है इसमें? No. Not pre-agreed. ठीक है? It's very clear now. Done? So liquidated का मतलब? yes, Unliquidated का मतलब क्या है? pre-decided, Pre-decided. Unliquidated based on situation and circumstances, fine. What is a fine? Fine का मतलब? Fine is a type of monetary compensation. Criminal. अगर फाइन भी डाले, it is a type of monetary compensation. Punishment. Monetary Okay. punishment you can say, not compensation. Monetary punishment. या तो आपको जेल में रख दो, या तो आपको फाइन डाल दो। ठीक है? So what is fine? Monetary punishment. इंजंक्शन का मतलब? stay, स्टे ऑर्डर। इंजंक्शन का मतलब क्या है? stay order, स्टे ऑर्डर। टाइप्स ऑफ इंजंक्शंस कौन से हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ इंजंक्शन. What are the different types of injunction? Perpetual and temporal. क्या है? What are the type of injunction? perpetual and temporary, Perpetual and temporal. और एक चीज याद रखिए, सिविल प्रोसीजर कोड, अंडर सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 39 टॉक्स अबाउट इंजंक्शंस। पूछ लेता हूं, नहीं था डीप में तो नहीं पूछता, बट आपको याद रहना ये। तो सिविल प्रोसीजर कोड में, इन सिविल प्रोसीजर कोड, which order talks about injunctions? order 39, Order 39. ठीक है? इतना याद रखो। what are unliquidated damages? not pre-decided, Not pre-decided. Liquidated damages? pre-decided, Pre-decided. What is fine?
Mandatory punishment. मैंडेटरी, Mon- मॉनेटरी पनिशमेंट, Mandate. मॉनेटरी माने पैसे दे के पनिशमेंट दे, पैसे ले लेके पनिशमेंट है आपका वही। और इंजंक्शन क्या है? Stay order. Stay order. स्टे ऑर्डर। कौन से कानून में है? Under CPC Order 39. Special ऑर्डर Relief 30। Act. इंजंक्शन दो, दो कानून में है देखो, एक तो सीपीसी है और एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इंजंक्शंस दो कानून में आता है। कौन सा कानून है? Under CPC and Specific Relief Act. सीपीसी, सीपीसी का पूरा नाम? Civil Procedure Code और 1908. एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कब आया? 1963. 1963। ठीक है, समझ में आ रहा? सो इंजंक्शंस, व्हाट आर इंजंक्शंस? Stay order. स्टे ऑर्डर कौन से कानून में है? Under Civil Procedure Code Order 39 and Specific Relief Act 1963. रिलीफ एक्ट 1963। इतना याद रखो काफी। एंड व्हाट आर टाइप्स ऑफ इंजंक्शंस? Perpetual and temporary. परपेचुअल एंड टेम्पोररी। ठीक है। So at this stage, it's enough. Now, the next question is very, very technical question. Please read. Dash is a transfer of ownership in a property for a price that is partly paid and partly due. Agreement to sell. Agreement to sell. हाँ, so क्या है? What is the first option? Bailment. Bailment. ठीक है. We'll go. I'll explain you all the four options. Then you tell me what is the right answer. ठीक है. Bailment. Bailment is, it is a type of special contracts. So what is a bailment? Is a type of special contract. अगर कॉन्ट्रैक्ट लॉ में है तो कौन से सेक्शन में रहना? So what is a bailment? It is a special type of contract under Section 148 of Indian Contract Act 1872. इससे क्या है? दो पार्टीज क्रिएट हो रहे। What are the two parties created? Bailor and bailey. Bailor and bailey. It deals with movable property. ये क्या है? प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस होता है। कौन सी प्रॉपर्टी? movable. मूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे आप जनरल लैंग्वेज में? Goods. गुड्स। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो गुड्स बोलेंगे, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी तो क्या बोलेंगे आप? Things. If it is immovable property, Transfer. it will be land. ठीक है. So इसमें होता क्या बेलमेंट में? व्हाट इज अ बेलमेंट, क्या बोलेंगे आप?
In bailment, goods shall be returned or disposed after the purpose is achieved. So bailment में होता क्या? What is the concept? Goods shall be returned or disposed after the purpose is achieved. For the purpose is achieved. ठीक है. मोस्ट कॉमन क्या हो रहा बोलिए? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन विच वी सी डेली बेलमेंट में? आज इसको बेलमेंट बोल के अब आज मालूम हुआ आपको, बट मोस्ट कॉमन चीज क्या है? Shares. मतलब नहीं, बहुत ही कॉमन एकदम फंक्शंस करे जब करते हैं अपन. Crockery, chairs, वे क्रॉकरी, चेयर्स, क्या बोलते हैं आप लोग? Rent. क्या बोलते हैं? Tenant. सप्लाइंग क्या बोलते हैं उसको? सप्लाइंग कंपनी Supplying रहती company, है. yeah. तो सप्लाइंग Yes. कंपनी से क्या करते हैं आप? एक 4 घंटे के वास्ते यू टेक सम चेयर्स, Rent पे सम लेते हैं. वाटर कैंस, रेंट पे लेते. क्या आपको ओनरशिप मिल जाती है उसमें? नहीं. क्या आपको उसका पोजीशन मिल जाता? No. नो. इट इज जस्ट टेकन फॉर सम टाइम, एंड वंस आपका फंक्शन हो गया तो क्या हो जाता उसके बाद? return. Return. यू विल रिटर्न इट. ठीक है. जो फायदा कर रहा है उसको बोलते हैं बेलर, जिसका फायदा हो रहा होता है उसको बोलते हैं बेली. समझ आ रहा? अब आप सप्लाइंग कंपनी में गए. नाउ द पर्सन इज सप्लाइंग यू द मटेरियल इज कॉल्ड एज व्हाट? हु इज अ Bailor. बेलर? बेलर The one who who supply is or provide. supplying. Baler is a person who is supplying the goods. ठीक है. Who is supplying the goods, and who is the belly? Who is using the goods. Person to whom the goods are supplied or delivered. Person whom the goods are supplied. जो सप्लाई कर रहा है क्या बोलते हैं उसको? Bailor. बेलर. जिसको सप्लाई एंड करे उसको जिसको सप्लाई बेली. हो रहा क्या बोलते? किसको क्या बोलते उसको? बेली. बेली. तो समझ में आया? ठीक है. सो व्हाट इज अ बेलमेंट? What is a bailment? Goods shall be returned or disposed after the purpose is achieved. It is a type of special contract in which goods are returned after the task is achieved or its object is achieved. कितने पार्टीज क्रिएट हो रहे बेलमेंट में? 2. कौन से? Bailor and Bailey. बेलर एंड बेली. अंडर व्हाट सेक्शन, अंडर व्हाट लॉ दिस बेलमेंट इज डिफाइंड? कौन से कानून में है Under बेलमेंट? Section 148 of Indian Contract Act. सेक्शन 148 section Indian contracts. अगर आप ये बोले तो इट इज सेक्शन नंबर 148 से लेके 171 तक. सॉरी, एग्जैक्ट अगर बताए तो कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक? 148 टू 148 to 148 to 171. 171. 171. सो वन पूरा है. ड्यूटीज ऑफ बेली, राइट्स ऑफ बेलर, पूरा मिला के शुरू से लेके आखिरी तक. तो कौन से सेक्शन तक है ये? 171. 171 तक. ठीक है. तो समझ में आ गया व्हाट इज बेलमेंट?
A bailment is a special type of contract. Yes. Under what section to what section of Contract Act? 148 to 171. How many parties are created? Two parties. Parties. Two Someone say, parties. what are those? Bailer, bailee. Bail Bailer and bailee. Who is the bailer? Bailee. Who Bailey. One Bailer who supplies? किसको बोलते हैं? supplies the food. The one who supply the food. Bailee, The person to whom the goods are supplied or delivered. okay. So, clear a point? So what is the second option? Sale. Sale में क्या हो रहा? What is happening in sale? Sale में it is a transfer of Full ownership. paid. What Full is sale? payment. नहीं एक मिनट. Sale है. It is a transfer of Transfer of property ownership. देखिए ओनरशिप है, पोजीशन है, बहुत ही क्लियर कट टॉपिक है ये. व्हाट इज द सेल? Transfer of Transfer of property ownership. ownership. कितने पार्टीज क्रिएट हो रहे? Two. Two. व्हाट आर दोस? Seller and buyer. सेलर एंड बायर. ठीक है. सो व्हाट इज द सेल? Transfer of property ownership. How many parties are being created? Two Two parties. parties. टू पार्टीज. अब देखिए, क्या आपको पैसे मिले तो ही आप सेल करते हैं या पैसे मिलने से पहले भी सेल कर सकते हैं? पैसे मिलने के बाद ही सेल कर दे. जरूरी है क्या? नहीं, पार्टली भी पहले कर भी सकते हैं. कर पार्टली पेड एंड पार्टली ड्यू. Due. समझ आ रहा? So it's not necessary that you get the full payment. Even if half of the payment is paid or a token amount is also paid, a sale can be registered. But कुछ तो देना. There should be some consideration. You cannot, without consideration, the agreement itself is void. The contract is void. माने zero है वो. जरूरी नहीं है. You should give the whole amount, then only the agreement of sale happens or the contract of sale happens. Even if you Sir, give some also, then you can, the sale can happen. ठीक सर है. इसमें कुछ मिनिमम परसेंटेज ऐसा रहता है क्या या फिर 50% फिक्स्ड ऐसा है? कुछ भी नहीं. कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं रहता. अगर आप मिनिमम 100 में से, अब देखिए, you are working in a shop, right? You might have seen 1 रुपए में लेके जाओ बोल दो, 1 रुपी सेल बोल दो. How many of you have seen this? 1 रुपी सेल. Yes. मैं बोलता है 1 रुपया, बट घर को गए बाद में 99 रुपए ले लेता आपसे. तो कुछ तो देना. ठीक है. How many of you know उर्दू? आई डोंट नो. जो उर्दू में लिखे हुआ है, जायदाद में मिल्कियत की मुंतकली इस कीमत के लिए जो इस कीमत के लिए जो जज़वी तौर पर अदा की जाती है और जज़वी तौर पर वाजिब अलादा है. वाजिब इलादा है. मतलब ऐसा कोई ऐसी सेल, ऐसी मिल्कियत जो थोड़े पैसे दिए और सेल हो गया और उसके बाद में फिर थोड़े पैसे, बाकी के पैसे दे दिए. क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको आप? Sale. इट्स कॉल्ड एज सेल. सेल. ठीक है. व्हाट इज थर्ड ऑप्शन?
Exchange of goods. Exchange of, what is exchange of goods? Exchange of goods किसको बोलते हैं? एक What is एक exchange? चीज के बदले दूसरी चीज लेना. What you are doing? You are बदलना. just taking something and giving something. In exchange of something, yes. इसमें क्या है? Goods are exchange. You are taking of some goods and giving of goods. इसमें As there barter is no system. price. Exchange में there is no price. कुछ ऐसा कीमत नहीं रहती. अगर आप चावल लियो और जवारी दियो. In how many of you have learned economics? Economics में exchange of goods क्या बोलते थे? What system it is called as? Barter system. Barter system. In economics, exchange of goods. कौन सा सिस्टम बोलेंगे इसको? बार्टर सिस्टम. इसका कीमत नहीं रहती. कोई एक चीज लेना और कोई एक चीज देना. समझ में आ रहा? कोई डाउट है इसमें? What is bailment? What is the bailment? It is a special type of contract. It's, So- in bailment, goods shall be returned or disposed after the purpose is achieved. उसके बाद सेल क्या है? Sale is a transfer of ownership. ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. और Ownership. It is partly paid and partly due. पार्टली पेड एंड पार्टली ड्यू. और एक Due. थर्ड ऑप्शन क्या है? Exchange of Exchange goods. of goods. एक्सचेंज ऑफ गुड्स. अगर गुड्स जो है मूवेबल है तो कौन सा कानून अप्लाई होता? Sales and Goods Act. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट. ठीक है. अगर आप एक्सचेंज कर रहे ऑफ सम इमूवेबल प्रॉपर्टी तो कौन सा कानून अप्लाई होता? Transfer of Transfer of Property Act. Property Act. 1882. अगर आप एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर रहे, इफ इट इज मूवेबल देन टू एक्ट्स अप्लाई. वन इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. एंड इफ इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, which law applies here? Transfer of Property Act 1882. Transfer of Property Act 1882. Next, most important, fourth option, agreement to sell. क्या है ये agreement to sell? सेल एग्रीमेंट. Agreement to sell का मतलब है, इसका पहला पॉइंट जो याद रखते हैं आप, Conditions met. it is an executory contract. तो क्या है? It is an executory Executory contract. Contract. If I can explain you, अगर सेल क्या है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. अगर आप जनरल चीज समझना सोचे, सेल इज लाइक ए मैरिज. अगर सेल मैरिज है तो एग्रीमेंट टू सेल क्या है? Engagement है. एग्रीमेंट टू सेल क्या है?
अगर आप अपने मोटे मोटे अल्फाज में समझना चाह रहे, सेल इज मैरिज, एग्रीमेंट टू सेल इज engagement. एंगेजमेंट टाइप। समझ आ रहा? अब एग्रीमेंट टू सेल क्या है? एग्रीमेंट टू सेल, it gives you conditions. Agreement of sale, it gives you conditions where transfer of ownership will take place. So what is agreement to sell? It's Agreement an to sell का engagement मतलब क्या which है? gives condition. It is a It gives agreement which is, conditions on the ये कंडीशन सेटिस्फाई हुए तो ये चीज होती। ठीक है, समझ में आ रहा? So what is agreement to sell? It is an executory contract. That is sale. Agreement to sell is, it gives you conditions where transfer of ownership will take place. Where transfer of ownership will takes place. What is transfer of ownership again? Then what is transfer of ownership? Sale. Sale. समझ में आ गया? So what is a bailment? Goods shall तो be ठीक है, returned or disposed after purpose is achieved. so bailment का मतलब क्या है? अगर जैसा काम हो गया आप गुड्स लेके जाके वापस दे दे, उसको बोलते हैं बेलमेंट। सेल क्या है? व्हाट इज सेल? Transfer of ownership. ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। व्हाट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स? Where no cost is involved, goods are exchanged. In economics, नो it प्राइस, is known as barter system. बार्टर सिस्टम। व्हाट इज एग्रीमेंट टू सेल? It's an executory contract and it gives conditions on the transfer of ownership. And it gives conditions on the transfer of ownership. समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। International Labour Organization is one of the oldest organization established in the year. तो कब एस्टेब्लिश हुआ? Labor Organization, International Labor Organization. ILO। ILO मतलब इंटरनेशनल International Labor लेबर Organization. established in 1919। established in 1919 under the Treaty of Versailles। कौन सी ट्रीटी है? Versailles. It's written as Versailles but pronounced as Versailles। ठीक है। Where it is headquarters? उसका पूरा नाम मालूम रहना, उसका हेडक्वार्टर्स मालूम रहना। Where it is headquarters? जेनीवा। कहाँ है जेनीवा? No idea. स्विट्जरलैंड। Switzerland.
So when it is formed, 1919. 1919. Under what treaty? Versailles. Treaty of Versailles. Where is headquarters? Geneva, Switzerland. जेनीवा, स्विट्जरलैंड। इसका याद, इससे पहले के कौन से पढ़े थे अपन, याद है? रिमेम्बर? यूनेस्को कुछ पढ़े थे सर, यूनेस्को का एक था और एक और एक यूएनसीट्रॉल। यूएनसी, यस, कोई डाउट है इसमें? यूनिट्रॉइट। नेक्स्ट। ओके, ये तो बोलो क्या है? Which writ can be issued with, right? It's a which writ can be issued when व्हाट the इज द रिट? appointment is contrary. रिट का Judicial मतलब क्या order. है? रिट का मतलब है जुडिशियल ऑर्डर। Judicial order. और और क्या नाम Cons. बोलेंगे? Court order. कोर्ट ऑर्डर। तो अपने पास कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से रिट्स का जिक्र है और कौन से आर्टिकल्स में है? फंडामेंटल राइट्स में। कौन से आर्टिकल है? हाँ, Article 32 आर्टिकल 32 and also and 226। आर्टिकल 32 32। किसके लिए आर्टिकल 32? Supreme Court, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और India. कौन सा आर्टिकल, और एक कौन सा आर्टिकल है? Article 226, फॉर हाई कोर्ट, High Court. फॉर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में व्हाट इज द सीक्वेंस? व्हाट इज सीक्वेंस गिवन? ये सीक्वेंस याद रखना जरूरी है, देखिए पूछ लेता हूँ मैं, सीक्वेंस वाइज बोलो बोलते। हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्वा वारंटो एंड सर्चोरी। को वारंटो एंड सर्शियोररी। सर्चोरी। सर्शियोररी। तो व्हाट डू यू मीन बाय हेबियस कॉर्पस? To produce the body. एंड द हेबियस कॉर्पस टू प्रोड्यूस द बॉडी। और इसका काम क्या है? To To release a person from illegal detention. तो हेबियस कॉर्पस के बारे में अगर आपको मानना है, तो पहला नाम क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? यूज द बॉडी। Produce the body. टू प्रोड्यूस द बॉडी, और टू यू मे हैव द बॉडी। और इसका इस्तेमाल क्या है? टू एंड इलीगल डिटेंशन। तो इससे हो रहा क्या? प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल, protection of personal liberty. प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। ओके, सो ओके, आई वांट टू आस्क यू, आई सेड अबाउट यू द कोर्ट विजिट्स, उसका ना कोई बोले ना कुछ भी। I asked, I asked about the court visits. Whoever was interested. Nampally criminal court में, I can take you to the Nampally criminal court and show you the premises. If anyone, सुबह में आना सर पड़ता। असल में हमारे हमारे बहन भी कोर्ट को जाते रहते थे। भाई आपका तो दूसरा घर ही है, वो दूसरों का जो है आपके लिए कॉमन है, दूसरे लिए नहीं है ना। नहीं नहीं, उसके अलावा नहीं नहीं,
वो आपके साथ जाएंगे बोल के इरादा हुआ था मेरा। अब ये रमजान है, फिर जॉब के टाइमिंग वगैरह थोड़ा सेटअप करने में प्रॉब्लम हो रही मेरे को। इंशाल्लाह जैसा जैसा होता दूसरे मैं any anyone आपको else इन्फॉर्म कर who दूँ are सर, एक दो दिन interested? पहले। Anyone else? Please inform me. आई एम और क्या है अपने कौन से है? व्हाट इज अ रिट? रिट का मतलब क्या है? Judicial Judicial order. order. Judicial order. पहला रिट कौन से रिट्स है मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में? 5 Five writs: writs. habeas Habeas corpus. corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari. एंड सर्श्योररी। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय हेबियस कॉर्पस? To produce the body. टू प्रोड्यूस द बॉडी। To क्या इस्तेमाल आता है इसको? To end illegal detention. फायदा क्या है इससे? protection Protection of of personal personal liberty. liberty. कौन से आर्टिकल में है? Article 32. 32. आर्टिकल नंबर 21, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल नंबर 21। हाँ, yes sir. ओके, सो प्लीज री लॉग इन। जैसे अपना सेशन एंड होता, प्लीज री लॉग इन कर लो, ठीक है। Okay sir.